So hello friends, वेलकम वंस अगेन इनटू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्या होती है और क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं जो एक बुक कीपर को फॉलो करनी पड़ती हैं, राइट। और हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बुक कीपर एंड व्हाट्स आर द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि रोल्स एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बुक कीपर एंड कुछ हमने बुक कीपिंग की ग्रॉसरीज जो है वो भी हमने देखी थी। ठीक है, आज का जो सेशन है जिसे हमने क्लास 2 में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या है? द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन। ठीक है, रिकॉर्ड एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन, यू कैन see on the screen. Now what is this record and post the transaction? So we will listen this first. So understanding the process for recording and interpreting transactions in a very important skill for any bookkeeper. It forms the foundation of accurate and reliable financial records of a business. By tracking and interpreting sales, expenses, invoices, क्या ट्रैक करना है? सेल लिख लीजिए, सेल्स एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करेंगे, इन्वॉइसेस को आप ट्रैक करेंगे, पेमेंट्स को आप ट्रैक करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं प्रॉपर तरीके से, देन यू कैन हेल्प योर क्लाइंट। दैट मीन्स यू कैन गिव द क्लियर पिक्चर टू योर क्लाइंट्स कि व्हाट इज़ द क्या है बिजनेस का, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आप किसी पर्सन को बता सकते हैं। Whether you notice increasing expenses for the business or you discover a highly profitable product, you can help your clients focus their efforts and maximize the profitability. ठीक है, तो बुक कीपिंग का एक और जो क्या कहते हैं, बुक कीपिंग का जो एक और पहलू होता है या एक जो और हेल्प होती है, दैट इज़ कि अगर आपका कोई क्लाइंट है, आप उसे कह सकते हैं कि भाई यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेलिंग्स और मार्केटिंग थिंग्स। ये जो हम अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है दैट वी विल हैंडल। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार इफ़ यू कैन सी द अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है, जो पहली साइकिल है, दैट इज़ दी कलेक्ट एंड एनालाइज ट्रांजेक्शन। कलेक्ट एंड एनालाइज द ट्रांजेक्शन। ओके, सेकंड स्टेप इज़ रिकॉर्ड एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन। आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे और उसे जनरल लेजर्स में पोस्ट करेंगे। थर्ड जो साइकिल है विच इज़ प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, राइट। आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना है। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इज प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। व्हाट इज दिस? प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। अभी एडजस्टिंग एंट्रीज क्या है? एडजस्टिंग एंट्री दैट मीन्स दी प्रोविजंस की एंट्री है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बुक द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, तो आप क्या करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल्स को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली रेंट के केस में भी रेंट एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे एंड पेबल का जो लेज़र है उसे क्रेडिट करेंगे, और भी बहुत सी जो प्रोविजंस की एंट्री है वो आपको करनी है। फिफ्थ इज प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, राइट। प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अभी नाउ व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दैट वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर। बट प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार सारी एंट्रीज कर दी है, राइट, तो अभी वो प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई भी बैलेंस, लेट्स सपोज कि डेबिट बैलेंस शो करना है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था कोई लेज़र, अभी आपने प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दी है तो क्या हो रहा है ना कि वो सही तरीके से बैलेंस शो करने लग रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। व्हाट इट मीन्स कि प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? तो फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड द बैलेंस शीट। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है, right. So in this case these are the total six steps of accounting cycle, right. Again we will start with some bookkeeping glossary. तो आप ये bookkeeping glossary जो है वो एक बार देखिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस,
एडजस्टिंग एंट्री क्या है, एमोटाइजेशंस क्या होते हैं, एसेट्स क्या है, एवरेज कॉस्ट मेथड क्या है, राइट। बैड डेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि मतलब अगर हमें पता है कि कोई क्लाइंट है या कोई क्लाइंट है जो हमें पेमेंट नहीं करने वाला है, तो हम उसकी बैड डेट्स की एंट्री जो है वो बुक कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एट दी जो उस कंपनी के एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी और इक्विटी के बारे में जानकारी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने बुक्स में एंट्रीज करी है और जो आपके बैंक अकाउंट में एंट्री शो हो रही है, उन दोनों को सही एक समय पे सही तरीके से मैच करना, विच इज़ कॉल्ड द बैंक रिकन्सिलेशन। सो कैश सेल्स, कैश बेसिस अकाउंटिंग। अभी कैश बेसिस अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड और रिकॉग्नाइज्ड ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स व्हेन द पेमेंट्स इज रिसीव्ड और द मेड, ठीक है, रेदर देन वेयर वर्क इज परफॉर्म। दैट मीन्स कि मान लो कि अगर आप अभी लेट सपोज कि जनवरी मंथ जो है वो क्लोज हुआ है, तो जनवरी मंथ जो क्लोज हुआ है उसके एंड पे कोई पर्टिकुलर सर्विस तो ड्यू बनती होगी ना, तो वहाँ पे बुक ना करते हुए जब हमें पता है कि हाँ अभी लेट सपोज फरवरी में इन्वेस्ट करना है तो फरवरी में इन्वेस्ट कर दिया, मार्च में इन्वेस्ट करना है तो मार्च में इन्वेस्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कॉमन स्टॉक क्या होता है? रिफर्स टू द कैपिटल द बिजनेस रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर इशूइंग द स्टॉक शो होल्डर, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, कॉन्फिडेंशियलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्ट्रा एसेट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। सो ये सारी जो है यहाँ पे ग्रॉसरीज है, तो आप ये सारी ग्रॉसरीज जो है वो अकाउंटिंग ग्रॉसरीज को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आई विल प्रोवाइड इन दी चैट बॉक्स, अंडरस्टूड। So we have seen this bookkeeping groceries, right? In the next chapter we will see that what is the double entry of bookkeeping. Now in simple words, डबल एंट्री ऑफ बुककीपिंग क्या होता है कि सी एवरी हर एक जो ट्रांजैक्शन है ना, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक देयर आर सम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमने यहाँ दिया है वो एक बार समझ लेते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग इज़ द वे टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो दो बार रिकॉर्ड करते हैं, एक होता है डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज़ होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। दे कैन यूज़ टू ट्रैक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस और इंडिविजुअल्स। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है ना। एंट्रीज इन अ टी चार्ट मस्ट ऑलवेज भी बैलेंस होनी चाहिए। एक्सप्लोर मोर about the double entry keeping, balancing debits, credit and reporting T charts in the balance transactions as follows. अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री मेथड इज़ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो इंश्योर करता है कि एक्यूरेसी एंड बैलेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट फॉलो द प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। बोथ आस्पेक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंसिंग एंड लास्ट वन इज़ रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये टी चार्ट्स, टी अकाउंट्स में एक लेफ्ट साइड राइट साइड में आप डेबिट और क्रेडिट मेंशन करके रखते हैं। डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। वाइस वर्सा क्रेडिट भी। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट इज अ डिक्रीज इन द एसेट्स और एक्सपेंसेस और एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। DEA मतलब होता है डेबिट और LER मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है ना। DEA माने डेबिट, ये लिख लो, DEA डेबिट एंड ER क्रेडिट। सो आई वुड लाइक if you want to see this video. Introducing Dealer, your key to understanding debits and credits in accounting. First, let's look at the DEA in Dealer. D stands for dividends, E stands for expenses, and A stands for assets. When we debit one of these accounts, we're increasing its value.
When a client has expenses like office supplies, or when they buy assets the business will own, such as equipment or inventory, we debit those accounts. This means they go on the left side of our financial equation. For example, when we debit an asset account, we're increasing its value, and since assets increase value, assets will also be debited, so this goes on the left side. Next, let's look at the L, the E, and the R in dealer. L stands for liabilities, E stands for equity, and R stands for revenue. When we credit one of these accounts, it indicates an increase in liabilities, equity, or revenue. So when a business has liabilities like loans or accounts payable, or when it has equity from owner investments or retained earnings, or when it generates revenue from sales or services, we credit those accounts. This means they go on the right side of our financial equation. Dealer reminds us that when we debit an expense or asset account, we increase its value, and it goes on the left side of the equation. On the other hand, when we credit a liability, equity, or revenue account, we increase its value, and it goes on the right side of the equation. And there you have it. Dealer helps you understand which side of the accounting equation debits and credits belong. Okay, so hope you have seen the video. Now we will see that okay, so here we are giving the knowledge check. So first question, why DEA and LER acronyms useful in accounting? Okay, so there are different options. Like it provides a step-by-step process of recording the transactions. No. It ensures accurate calculations of financial ratio. This is also not the right acronym. So first one is, it helps you understand which side of the accounting equations debits and credit to write. So this is the right answer. Okay, now what is the purpose of entry of bookkeeping? To track revenue, expenses, to calculate net income, to ensure accuracy and maintain the balance in accounts. Okay. Bookkeeping grocery we have already seen, right? The next, reconciling the transaction. Now what is the वाई रिकन्सिलेशन? अभी रिकन्साइल क्यों करना है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है ना? बेसिकली इसमें क्या चीज़ होती है ना कि ओके, सो वी विल सी दैट व्हाट इज़ दिस वाई रिकन्साइल ट्रांजेक्शन. अभी ट्रांजेक्शन जो है उसको रिकन्साइल क्यों करना है? ओके, सो दी थिंग इज, द पर्पज ऑफ रिकन्सिलेशन इज टू वेरीफाई दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड प्रिसाइजली इन द राइट प्लेस एंड इन द राइट अमाउंट. ठीक है, तो रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी अगर आप एक एंट्री पास कर रहे हैं तो वो सही जगह में, सही अकाउंट में डेबिट हुई है नहीं हुई है, सही अकाउंट में क्रेडिट हुई नहीं हुई है, उसे चेक करना, ताकि जो आपका डेटा है ना वो पूरा प्रिसाइजली क्रिएट हो सके. ओके, सो हियर आर सम स्टेप्स थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जैक्टली द रिकन्सिलेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें. सो फर्स्ट चीज़, स्टेप 1 क्या है? स्टेप वन इज टू गैदर documentation. So in this step you need to gather all the relevant documentation such as receipts हो गया, आपके invoices है, bank statements है, okay, and other supporting documents for records. So these documents will be your reference for comparing and validating the recorded transactions. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दैट इफ़ आपके पास जो है वो अगर इनवॉइस है या बैंक स्टेटमेंट है, दैट यू कैन रिकन्साइल विद दी अदर स्टेटमेंट्स. रिकन्साइल का सिंपल मतलब होता है कि दो चीज़ों को मैच करना. द नेक्स्ट जो स्टेप है विच इज़ दी टू कंपेयर एंट्री. क्या है? कंपेयर एंट्रीज. केयरफुली कंपेयर द एंट्रीज इन द लेजर account with the corresponding documentation. So you need to ensure that the transactions regarding the accounts affected, the amounts involved and the transaction dates are accurately recorded, right? So this is the step 2. Step 2 is to check the accuracy. Now you need to verify the accuracy of recorded transactions against the supporting documentations, and you need to look for discrepancies such as errors in the amounts or missing entries. Okay, the next step is to identify the discrepancy. इसका क्या मतलब होता है
अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है और बिजनेसेस आर फाउंड ड्यूरिंग द कंपैरिजन का, ओके, इन्वेस्टिगेट एंड आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द एरर्स और ओमिशंस. कॉमन कॉजेज कैन इंक्लूड डेटा एंट्री के कुछ एरर्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो सकते हैं, या इनकरेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स. मतलब इनकरेक्ट कैटेगराइजेशन दैट मीन्स कि कोई जो ट्रांजेक्शन है वो एसेट का है, वो गलती से लाइबिलिटी में चला गया है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करना, that's the fourth step. And the fifth step is to make adjustment. So in this step you need to make necessary adjustments necessary adjustment. This may involve correcting errors, adding missing entries, relocating transactions to the correct account. And sixth step is to, once all adjustments होगी, ensures that the latest entries match the documentation accurately, documents the reconciliation process and any changes made to the provide clear audit trail reference for future analysis. Now the lesson 4. What we have covered in the lesson 4, this is the effect of account on action, effect of accounts on action. डेबिट क्रेडिट. टी अकाउंट्स, टी माने टी शेप. फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड वन इज क्रेडिट. ठीक है. टी अकाउंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड यूज इन अकाउंटिंग टू इलुस्ट्रेट द फ्लो ऑफ डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स. ओके, द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड जो होता है दैट इज रिप्रेजेंट दी, दिस इज द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट डेबिट. यू कैन सी हियर दिस इज द लेफ्ट साइड which is representing the expenses, and the credit side, this is shows the income of the particular transaction, right? So T accounts are usual representation used in the accounting to illustrate the flow of debit and credit. Transaction 1, invoice payment. Okay, so on 8th of May, invoice paving business was paid 280 by housing subdiving for paving their park. How would you record this transaction? So let's see how you can record this transaction. Okay, transaction allows business on May, which is okay. So now we'll see what is the cash basis accounting method. This is very important thing. The cash basis accounting method क्या होता है, ठीक है ना. और इसे कैश बेसिस कहता हूँ. कैश बेसिस अकाउंट मेथड वेयर रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस है आर रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसीट्स और पेमेंट. एक्चुअल रिसीट्स और पेमेंट रादर देन द कंप्लीशन ऑफ वर्क और डिलीवरी ऑफ गुड्स. सिंपल है. कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, वेयर द रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसीट्स, बेस्ड ऑन एक्चुअल. अभी कैश बेसिस पे होता है ना सब, एक्चुअल रिसीट्स और पेमेंट rather than completion of work or delivery of goods. Completion of work or delivery of goods, right? This means transactions are recorded in real time as they occur. So here are some points about the cash basis account. Does not have accounts payable or accounts receivable. ठीक है, इसमें कोई accounts payable कोई receivable नहीं होता है. Everything is recording when it's happen. Cannot be used if you offer credit or have inventory because of its simplicity. Cash basis accounting is a favorite for small businesses. However, because you are not tracking future transactions, it does not always give you a full picture of income and expenses. It's a more snapshot of business activity. Okay, so see the video. Accounting is necessary. Cash basis provides a snapshot of your client's current accounts. Most of my small business clients love the simplicity of cash basis accounting. Take Carmine, a talented makeup artist. He just keeps track of his payments and expenses as they happen. No complicated calculations, just straightforward recording. With a quick glance, Carmine can see where his money stands. It's easy for clients to grasp, but for bookkeepers, it's a tad trickier than accrual counting. Cash basis accounting lacks accounts payable and receivable, leaving clients unaware of what they owe or expect to receive. That's where we bookkeepers come in. We track bills, invoices, and create cash flow reports and projections.
These reports are gold for clients, showing the money from point A to point B, highlighting anticipated changes in account balances and providing insights. Cash basis accounting also brings a tax advantage. Small businesses only pay taxes on money that's actually in their bank account, not on hypothetical earnings. It's easier to explain to clients what they're paying taxes on when they can clearly see their income and expenses. The net income, which is their income minus expenses, becomes their taxable amount. Clear and simple. Of course, cash basis accounting isn't suitable for everyone. If your client extends credit to customers, deals with inventory, or worries about future transactions, accrual accounting is necessary. Cash basis provides a snapshot of your client's current accounts rather than the full picture. Still, most clients find it refreshing. Cash basis provides a snapshot of your client's current accounts rather than the full picture. Straightforward and choose to embrace its simplicity.